Good evening to all of you. Is this audible? Visible everyone? All clear? सुनी पारछंती? देखि पारछंती ठीक भाବରେ? Properly audible, visible, all clear? Clear? ठीक अछि. So गत कालीर क्लास रे हमें डिस्कशन स्टार्ट करिथिले मेंस रिलेटेड टॉपिक इकोनॉमिक्स बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऊपर हमें लास्ट क्लास रे डिस्कशन स्टार्ट करथिले इजंट इट. आज आउ किछि इंपोर्टेंट टॉपिक को जीवी. आउ किछि इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करबा आजिर क्लास रे है ना. So the topic of discussion, today's topic of discussion is growth, development and happiness. कौन कहली? Today's topic of discussion is growth and development. है ना. then कौन सीखिबा हमें by the end of this class you will be able to understand inclusive growth इंडिया रे ओडिसा रे inclusive growth रो status कौन जानिबे, financial inclusion कौन जानिबे, regional disparity in India and Odisha, previous year question, expected question, ये सब पॉइंट ऊपर आज हम डिस्कस करिवे. लास्ट क्लास रे हमें कौन देखुले? लास्ट क्लास रे हमें बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स स्टार्ट करथिले. बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी or I can say Indian economy at a glance. Indian economy at a glance. एठी हम देखले कोन ना प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. बुझिला? एतिक जिंस हम देखु, एतिक जिंस हम देखले लास्ट क्लास. आज देखिए हम इंक्लूसिव ग्रोथ एंड ऑल दोस. नाउ व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ? Now what is inclusive growth? Inclusive growth कहले हम कोन बुझु? Now what is growth? जीडीपी इंक्रीज हवा को कहा जाए ग्रोथ. कौन कहली? जीडीपी इंक्रीज हवा को, जीडीपी टा इंक्रीज हवा कौन कहली ना जीडीपी इंक्रीज हवा को कहा गला. दिस इज नोन एज ग्रोथ. बुझिला? बा प्रोडक्शन बढ़िला एट या सहित हम कोन देखले ना एटी प्रोडक्शन बढ़ु. प्रोडक्शन बढ़िबा को हमें ग्रोथ कहले बा जीडीपी टा इंक्रीज हवा को हमें ग्रोथ कहले. कौन कहले? जीडीपी इंक्रीज हवा को हमें ग्रोथ कहले बा प्रोडक्शन इंक्रीज हवा को हमें सिंपली ग्रोथ कहले. नाउ द क्वेश्चन इज वेदर दिस fruit of growth, the result of growth is available for everyone or not. Now whether it is available for the vulnerable section of society, whether it is available for the vulnerable sections of the society or not. Now who are vulnerable sections of the society? The question is who are vulnerable section? ना कोई poor, economically weaker section, scheduled caste, scheduled tribe, OBC, हाँ कि नहीं, SC, ST, OBC, है ना, women, है ना, women, आउ की थर्ड जेंडर, थर्ड जेंडर, एमाने vulnerable section of the society. So it question होची जो growth होची बा जो development होची, whether that growth includes this vulnerable section of society or not. Yes, the vulnerable section of society को include करूची ना नहीं. If it includes, then it is inclusive growth. So खाली growth हला होनी. Indian context रे कौन हुए? इंडिया रे जदि हमें देखिबा 90% of resource, Indian context रे जदि हमें देखिबा 90% of resource that is held by 10% population.
this is held by 10% population, and 10% resource, 10% population, sorry, 10% resource is held by 90% population. So जोटा हम देखो Gini coefficient is high in India. The value of Gini coefficient, this is high in India. बुझिला Gini coefficient कौन कहली Gini coefficient रो value टा India रे this is very high. बुझिला so it inequality अधिक, growth रो penetration of growth is less. The question is all about penetration of growth. Penetration of growth, whether available to everyone or not, whether this is available to everyone or not, ये समस्त को available अच्छी कि नहीं, बिल्कुल penetration of, तो कौन को that is called penetration of growth. Clear है? So एटी हमें देखु जे कोना socio economic inequalities, disparities, discrimination, they have been structural attributes of diversified and stratified Indian society. Now Indian society is diversified. Different diversity ro loko exist करते India रे, different culture रो loko exist करते, still unity in integrity is there, unity in diversity is there, still unity in diversity is there. तो जो माने minorities रहिले, SC ST OBC रहिले, ये कुछ सेमान को पाखरे development बा growth पहुंची पारुछ ना नहीं. Simple जिनसा बुझिला. Now the next question is, what is inclusive growth? We are clear. Now notes mu de dichi, notes nije padhibi. Now why there is a need for inclusive growth? Inclusive growth ra आवश्यकता काहे की? Now inclusive growth is required for income disparity. Oxfam रो गोटे रिपोर्ट आसला, मु कहि सब लेटेस्ट रिपोर्ट डाटा एगुडा को लिखिबा. Oxfam रो रिपोर्ट आसला 2021 रे, इगला income of 84% of household in India that fail. India रे 84% of households सेमानकर income reduce हो जाइछ. 84% of income from 84% of Indian household that is reduced, but number of billionaires grew. Billionaire मानक number बढ़ी जाइछ. कौन कहली billionaires मानक number बढ़ी. बुझिला. Now how कौन कहछ, India's growth has primarily benefited the urban elite middle class population. जो माने India growth is mostly because of, in India the growth is mainly because of, in India growth is mainly because of which sector? Tertiary sector. This is because of the tertiary sector. Now growth hele ko manakar labh hobo na, those who are involved with the tertiary sector. Now tertiary sector of growth is more than primary and secondary sector, isn't it? So those who are involved in tertiary sector, they will have more growth as compared to those who involved in the primary and the secondary sector. Simple jinsa which nahi. So in India around 70% of poor, they are from rural area. So there is a lack of basic social infrastructural service like education, healthcare facility, electricity, drinking water, road, communication, transportation, electricity, internet facility, all these are not available. And especially the vulnerable section of the society like women, laborer, scheduled caste group, scheduled tribal population, religious minority, disabled population, they don't get a job opportunity. They don't get a job opportunity. So an estimated 90% of Indian workforce, it is engaged in the informal or in the unorganized sector. Couldn't it is engaged in informal or in the unorganized sector. बुझेला. ताले income disparity को reduce करिया पय हमको inclusive growth रा आवश्यकता. So to reduce income disparity we need inclusive growth. Then is for regional disparity. Now there are some places which are underdeveloped. मु कहिबी तमिलनाडु और कर्नाटका वर्सेस छत्तीसगढ़ और झारखंड. Now this is developed region. मु कहिबी बिहार को मानी परि, बिहार, महाराष्ट्र वर्सेस बिहार, महाराष्ट्र वर्सेस बिहार. देखो व्हाट इज द कंडीशन. ना ओडिसा रा कॉन्टेक्स्ट रे जदी हम देखा ईस्टर्न ओडिसा वर्सेस वेस्टर्न ओडिसा, ईस्टर्न ओडिसा वर्सेस
वेस्टर्न ओडिशा और मु कोई मेनलैंड इंडिया वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मेनलैंड इंडिया वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बुझिला ताले एठे हमको रीजनल डिस्पैरिटी देखियो मिलछि बा हम कोई अर्बन वर्सेस रूरल एरिया अर्बन वर्सेस रूरल एरिया regional disparity. Now, regional disparity को reduce करिया in India, interstate regional disparities there, intrastate regional disparity. Now, state versus state mu कहली inter और intra कौन? Inter state versus now I talked about Bihar versus Tamil Nadu, Chhattisgarh versus your Karnataka. Now, inside the state, गोटे state भीतर mu कहली Maharashtra भीतर let's say Mumbai region versus the other regions जोड़ा underdeveloped region. Odisha रे Bhubaneswar versus the western part or the KBK region region. So inter and intrastate disparities there I'm going to reduce करियर अछि बुझिला बुझि होछ ना नहीं. The next is for demographic dividend. Next कोन पे हमको दरकार एटा inclusive growth is required for demographic dividend. Now what is demographic dividend? यदि हम देखिया 15 year रू जो मानकर एज रहला 64 years 15 नु 64 years जो मानकर एज रहला एमाने को कुआ गला कना दे आर माने कंज्यूमिंग एमाने कंज्यूम करंती अधिक माने दे आर वर्किंग पॉपुलेशन नाउ इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे ये पॉपुलेशन इज मोर दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज दिस इज द रीजन फॉर व्हिच इंडिया इज कॉल्ड एज यंगिस्तान कौन कौन कह देते इंडिया को इंडिया इज फॉर दिस पर्पस इंडिया इज नोन एज यंगिस्तान बुझिला इंडिया को यंगिस्तान कहीं को because 15 to 64 years भीतर अछि that's why it is called Youngistan. Now ये जो Youngistan अछि बा the young population in India बा जो young population in India याको कोन करिया young population utilize करिया पई याको proper utilize करिया पई हमको दरकार कोन to utilize this demographic dividend हमको we need inclusive growth हमको inclusive growth रा आवश्यकता अछि. Otherwise जब तुम एटा को यूटिलाइज न करियो डेमोग्राफिक डिविडेंड को प्रॉपर्ली नाउ रिमेंबर माय मार्क माय स्टेटमेंट if demographic dividend is not used properly it will turn into demographic disaster. Please mark it. It will be turned into demographic disaster. Kahin na that the youth population, if you don't utilize the youth population properly, that will be turned into demographic disaster. What is demographic disaster? The youth, they will be involved in social media abuse, they will be involved in drugs trafficking, human trafficking or arms and ammunition trafficking. But they may join their hand with anti-social elements like the left-wing extremism, or they may join their hand with insurgent groups in the northeastern state, in Jammu Kashmir, mafia manako sହିତ international mafia manako sହିତ semane involve होई पारंती बुझि पले मो कथा. So for demographic dividend हमको inclusive growth रा आवश्यकता अछि. Now is this clear? बुझिला एति पॉइंट ना बुझ पले मते कोन क्विक रेस्पॉन्स प्लीज जल्दी जल्दी कोन क्विक रेस्पॉन्स देन हैला बढ़िया. नाउ ये चारिटा फैक्टर हम पढ़ले फॉर डेमोग्राफिक डिविडेंड रीजनल डिस्पैरिटी इनकम डिस्पैरिटी रीजनल डिस्पैरिटी डेमोग्राफिक डिविडेंड कौन कौन कहली इनकम डिस्पैरिटी फॉर इनकम डिस्पैरिटी
regional disparity, अगला for demographic dividend. एगुड़ा को मिसिक हमें कौन कहली, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर कौन पाई दरकार एटा, inclusive growth. Why inclusive growth is required? Now same what are the elements of inclusive growth? Elements कौन inclusive, it why लिख दो, why inclusive growth. Now what are the elements of inclusive growth? कौन कहले what are the elements of inclusive growth? को element थिला हम कहबा inclusive growth. No, first is social inclusion. First is social inclusion. Social inclusion कौन aim करना, it aims to empower poor and marginalized section of the society. Your objective कौन? Your objective is to empower poor and marginalized section of the society. Poor and marginalized section of the society किए? Marginalized section में तेरे कहाँ को रख परियो ना? You can put your SC, ST, OBC. एमन सब marginalized section of the society. EWS, PWD. तो यार objective, basic objective of inclusive growth is to end extreme poverty and to foster shared prosperity. कौन करियो? Prosperity बढ़ेइबो, कौन कहली? Extreme poverty end करिबो and it will increase prosperity. Now first is social inclusion, then next is economic inclusion. It means opening up of economic opportunities to the disadvantaged section. Opening up of economic opportunity को माना कोई disadvantaged section. Now economic opportunity कौन? Especially mostly this is the job opportunity. Mostly this is the job opportunity. तो ये कुछ खाली economic growth है लाभनी. ये it should be reachable to semi-urban area. It should be reachable to rural area, tribal land, rural, semi-urban area. ये सब को इटा reachable होगा दरकार. That is economic inclusion. That is called economic inclusion. बुझिए ना economic inclusion कौन? The next is financial inclusion. Financial inclusion. So financial inclusion रा अर्थ, यार अर्थ होची financial services at your doorstep. कौन कहली यार अर्थ कौन? यार अर्थ होची financial services at your doorstep. देखो financial inclusion बोली कोच. So this is the delivery of financial services at an affordable cost to this section of disadvantaged and low income group, low income segment of the society. So the poor, the disadvantaged groups, those who are far away from development, those who are far away from development, सेमानक पकरे financial resource टाको पहुंचेबा को कोन कहते ना कहते financial inclusion. That is called financial inclusion. हैला बुझेला financial inclusion. Now digital inclusion. What is digital inclusion? Now we are talking about different aspects of inclusion. को aspect रे हम include करि परिबे. Digital inclusion means, digital inclusion अर्थ कोन ना access to internet, access to digital facility अच्छी कि नहीं. So it enables people to access and use ICT, information communication technology. यार example के मते देई परिबे? यार example के देई परिबे? ना COVID-19 परे जेतबे वैक्सीनेशन स्टार्ट हला देखिबे सेटा सब ऑनलाइन बुक करिकि वैक्सीन नोट लोग जाई नै कि ऑनलाइन बुकिंग करिकि सब वैक्सीन नोट रे जाई लोग ना ऑनलाइन बुकिंग रे कोन हला ना अर्बन एरिया रे जो माने थिले दे हैव मोर एक्सेस टू सेमानक पाखर अधिक एक्सेस थिला कोन पई इंटरनेट टेक्नोलॉजी तो सेमाने नियरेस्ट रूरल एरिया रे पीएससी मानक रे सीएससी मानक रे बुक करिकि जाई नै गले वैक्सीन बट रूरल एरिया रे लोक माने ही दे आर डिप्राइव्ड ऑफ रूरल एरिया रे लोक माने ही दे आर डिप्राइव्ड ऑफ गेटिंग वैक्सीन व्हाई काहे कि बिकॉज़ दे डोंट हैव एक्सेस because they don't have access semanako pakare access hi nahi. So digitally inclusive society is important to economic and workforce development, civic participation, education, healthcare and public safety. बुझिएला digital inclusion कौन? The next is environmental inclusion. The next is environmental inclusion. Now what is environmental inclusion? Environmental inclusion कौन?
That is environmental inclusion. कि कहूँ तो फॉर डेवलपमेंट ग्रोथ और डेवलपमेंट पे हमें कौन करूचे फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वी आर कंज्यूमिंग द नेचुरल रिसोर्स कौन करूचे हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट पे हमें कंज्यूम करूचे नेचुरल रिसोर्स को विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन कौन कहली विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन हमें ताको कंज्यूम करी करी चलचे so that is why there is lack of environmental assessment on the basis of standard parameters so it results or it threatens the existence of produce the environmental inclusion अर्थ एटी देखले हमें कि unsustainable development simply it refers to unsustainable development बुझेला unsustainable development कौन so without keeping an eye on the environmental aspect without keeping an eye on environmental aspect that is unsustainable development बुझेगला digital environmental financial social economic कौन कौन कहली social economic financial digital environmental है ना inclusive these are different aspects now what is the strategy for inclusive growth what is the strategy for inclusive growth next point which I am बुझी होची क्लैरिटी आसुची पॉइंट ऊपर no strategy most important strategy कोन creation of greater opportunities for all कौन कुछ it says about opportunities for all sustainable development diffusion of opportunity in terms of enabling access through investment in education health infrastructure diffusion of opportunity को फील्ड मानकर ना स्पेसिफिकली एक सोशल डेवलपमेंट को एगुड़ा कौन को जाको ना को सोशल कौन को जाको ना सोशल डेवलपमेंट now what are the key components of inclusive growth strategy it includes sharp increase in investment in rural area especially rural infrastructure like rural road agricultural credit provide करियो agricultural credit to farmers rural infrastructure development rural internet है ना then irrigation facility next increase in rural employment through unique social safety net में rural employment तक बढ़ाइबो employability create करियो employment creation in the rural area बुझिला now next point हम देखिए what are different dimensions of inclusive growth को dimension it included to ensure inclusive growth the first requirement is governance this is the fundamental pillar of inclusive growth or good governance kahinki the inclusion decision making accountability transparency is main darkar so good governance tends to design good policies it also seeks to strengthen institutions to implement these policies efficiently and effectively so transparency and accountability these are two main pillars of good governance and they are to be effected through implementation of RTA Act. Good governance can ensure good. How can you ensure good governance? Good governance can be ensured through RTA Act. Next is energy and resource. Now most important part. If inclusive growth हमें establish करिया को चाहूँ, so हमको कौन दरकार ना energy और resource. India energy generation capacity
and effective utilization. Now this is inadequate. India energy generation capacity that is inadequate, currently inadequate. So it resulted into unreliable power supply. 24/7 power supply 24/7 power supply. 24/7 power supply ए पर्यंत आम पाखरे मिल पारु नाही. रूरल पावर सप्लाई नाही. रूरल पावर सप्लाई नाही आम पाखरे. ताले कौन करि परिया माने व्हाट वी कैन गो फॉर रैशनल एनर्जी प्राइसिंग. नॉन कन्वेंशनल मेथड अडॉप्ट करि परिया. वी कैन स्ट्रेंथन रेगुलेशंस, वी कैन इंप्रूव डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिमाइज थेफ्ट. पावर थेफ्ट को कमाई परिया. जे हुक अप के जाळुछन ताको रिड्यूस करि परिया. Now telecommunication and technology. Now telecommunication service affordable price rate, multiple measures we can come out with. ये सब करि परियो. Infrastructural development, both physical infrastructure and social infrastructure, hard and soft infrastructure. So केते बेले भी आंसर राइटिंग करूछन सेठी दीटा इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर सब लिखंतु, फिजिकल एंड फिजिकल और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, आ गोटे सोशल बा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. सोशल बा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. यार एग्जांपल कोन हम यार एग्जांपल है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी. नाउ यार फिजिकल हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जांपल मुझे रोड, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब वास्ते हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. से कुछ ये सब को डेवलप करा. देन हेल्थ केयर फैसिलिटी, अगेन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर विद आस. हेल्थ केयर फैसिलिटी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर विद आस. नाउ नेक्स्ट हम देखिए व्हाट आर द चैलेंजेस. इंक्लूसिव ग्रोथ काहे की ही परनु. व्हाट आर द चैलेंजेस टू इंक्लूसिव ग्रोथ को. व्हाट आर द चैलेंजेस टू इंक्लूसिव ग्रोथ. काहे की इंक्लूसिव ग्रोथ ही पारु नाही इंडिया रे. मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है करप्शन. करप्शन कारणरू डेवलपमेंट नहीं पारु. जस्ट बिकॉज ऑफ करप्शन डेवलपमेंट नहीं पारु. पोर गवर्नेंस, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी. कौन कहले पोर गवर्नेंस, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी, पॉलिसी लॉकजैम, पॉलिसी मानकर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं पारनी. दीज आर दी प्रॉब्लम्स. ताले मते कहंतु इंक्लूसिव ग्रोथ केते बेले ही परियो. व्हेन कैन वी एंश्योर इंक्लूसिव ग्रोथ. केते बेले हम इंक्लूसिव ग्रोथ एंश्योर करि परियो. केते बेले हम इंक्लूसिव ग्रोथ एंश्योर करि परियो. आपको women participation को एनहांस कर परियो by enhancing women participation, है ना. by participation of all the sections of society, all the sections of, by participation of all the sections of society. चलो इंक्लूसिव ग्रोथ गला. इंक्लूसिव ग्रोथ ऊपर समस्त लिखि परिबे, किछ असुविधा नै. नेक्स्ट पॉइंट को आसी फाइनेंशियल इंक्लूजन. फाइनेंशियल इंक्लूजन ने मो स्कीम बेस्ड डिस्कशन करिवि. फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन अर्थ कोन. व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन कहले हम कोन बुझे. जेम इंक्लूसिव नो फाइनेंशियल इंक्लूजन, इट इज अ पार्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ. इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स ग्रोथ टू एवरीवन. इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स ग्रोथ टू everyone. Financial inclusion अर्थ providing financial services at the doorstep of people. कौन बोल providing financial services at the doorstep of people. सेटा कौन फाइनेंशियल इंक्लूजन बोली कहूँ.
ना को मानको पाखरे फाइनेंशियल सर्विस नाही ना व्हाट इज फाइनेंशियल सर्विस कोन व्हाट इज द बेसिक फाइनेंशियल सर्विस बेसिक फाइनेंशियल सर्विस होची गोटे बेसिक बैंक अकाउंट बेसिक बैंक अकाउंट जहाँ कहते बीएसबीडी अकाउंट बेसिक सेविंग बैंक डिपोजिट अकाउंट कौन कहली बीएसबीडीए अकाउंट बीएसबीडीए अकाउंट बा कहते नो फ्रिल अकाउंट नो फ्रिल अकाउंट ये आसला गोटे कोन प्रधानमंत्री कौन से स्कीम आसला 2015 रे प्रधानमंत्री जनधन योजना ये कहले कि प्रथम गोटे बेसिक बैंक अकाउंट आना जपर अकाउंट नहीं आम पाखे आम कहि परिबनी वी कैन नॉट अचीव फाइनेंशियल इंक्लूजन तो एथिरे सब प्रकार सब्सिडी आसीबो एथिरे सब प्रकार डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो गुडा सब लोन सॉरी गैस तरीका यूज कला पर जो सब्सिडी आसुनी सेटा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हेकी एई बैंक अकाउंट रे आसे ए बीएसबीडीए बैंक अकाउंट रे आसीबो ए सब गुडा फाइनेंशियल इंक्लूजन अर्थ होची प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एट द डोर स्टेप ऑफ पीपल जो मानक पाखरे ये सर्विस पहुंची पारु नै जो मानक पाखरे ये सर्विस मिली पारु नै जो मानक पाखरे ये सर्विस पहुंची पारु नै बा जो मानक पाखरे ये सर्विस मिली पारु नै है व्हाट आर डिफरेंट स्कीम्स ए ग्राउंड रे स्कीम अछि कोन हम पाखरे म ऑलरेडी कहली प्रधानमंत्री जनधन योजना अटल पेंशन योजना प्रधानमंत्री वय वंदना योजना स्टैंड अप इंडिया स्कीम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सुकन्या समृद्धि जीवन सुरक्षा बंधन योजना क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी स्कीम वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना ना दीज आर डिफरेंट स्कीम्स मु कहली दीज आर डिफरेंट स्कीम्स मु किछ स्कीम ऊपर एटी डिस्कस करूची so that you can have basic idea. Now jam trinity रो अर्थ कोन त्रिदेव जेंति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देखु से बळे एगो जाम ट्रिनिटी रे किए ना जोटा कहली तुमरा जनधन योजना अकाउंट हला जे स्टैंड्स फॉर जनधन योजना अकाउंट ए स्टैंड्स फॉर योर आधार कार्ड and M stands for your mobile number. JAM, JAM, JAM. बुझला जाम ट्रिनिटी कौन मतलब ये तीनटा को लिंक करके से कुछ अकाउंट खोलो देन आयुष्मान भारत 2018 हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करिया पे ना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करिया पे दिस स्कीम इज देयर दिस इज अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड दिस इज देयर इज इंश्योरेंस कवर ऑफ 5 लाख पर annum. There is insurance cover कहते ना इंश्योरेंस कवर ऑफ 5 लाख पर annum. प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना PMSYM प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना. So this is world's largest pension scheme. It was launched in February 2019. एम कौन ना एम होची टू वर्कर्स जो माने अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर रो वर्कर ये सेही दिस स्कीम प्रोवाइड्स assured monthly pension 3000 per month 3000 per month assured payment होची हैला. सौभाग्य स्कीम ना सौभाग्य स्कीम रो ना को मन सुनचंदी स्कीम सहज बिजली हर घर योजना बा सौभाग्य यार ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सल हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन यार ऑब्जेक्टिव समस्त घरे घरे हाउसहोल्ड रे इलेक्ट्रिसिटी 24/7 इलेक्ट्रिसिटी कोड ना स्पेशली इन द रूरल स्पेशली कोडी ना स्पेशली इन द रूरल बुझेला मो कथा ना बुझेला. श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन रूरल अर्बन डेवलपमेंट मिशन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. Now these are different schemes. These are different schemes. प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कनेक्टिविटी बढ़ाया पे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंक्रीज करिया पे पीएम दक्ष योजना प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना पीएम दक्ष हैला वाला ये गला these are different schemes. किसी डाउट ना मु केतरा क्वेश्चन गसी ना केतरा क्वेश्चन गसी जो पॉइंट ऊपर डिस्कस कली सही पॉइंट रू लेट्स डिस्कस अबाउट सम ऑफ द क्वेश्चंस. क्लियर ना डाउट अछि जति पचार दियो अदर विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. एनी डाउट मते लागुनी कहा को डाउट अछि समस्त को बुझी जाउथियो मितांजलि क्लियर बहुत इजी टॉपिक
these are very easy topics. These are very easy topics. बुझेला नेक्स्ट टॉपिक को जी चलो यस समस्त बुझिले बहुत बढ़िया ताले नेक्स्ट टॉपिक को जीवा सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा rather than focusing solely on quantity, inclusive growth concerns itself with the quality of growth. Examine. Also highlight core components of inclusive growth. Also highlight core components of inclusive growth. Examine core components of inclusive growth. Question पूछेगा clearly. Question पूछेला clearly question demand कौन करूँ आगे बुझा question demand कौन करूँ तो मु कहि सब इंट्रोडक्शन ने किछि इंपोर्टेंट डाटा लिखिबे कोन कहि इंट्रोडक्शन ने सब किछि ना किछि इंपोर्टेंट डाटा लिखिबा को चेष्टा करिवे अब देखो एटी कोन लिखाला इंडिया इज रैंक्ड वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एब्सोल्यूट नंबर USD 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी रैंक 3rd इन टर्म्स ऑफ PPP ताने एटी देखले एई जगह रे इंडिया रा पोजीशन इज गुड स्टिल जदि हम सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखिबा लाइक हंगर डेवलपमेंट इंडेक्स inclusive development index global hunger index now in those index India is not performing well ए index मानकरे India रा performance is not good ए index मानकरे India रा performance is not good बुझिला now intro बुझी पारले समस्त केमति लेखा जाउछ how to write an introduction बुझिला now this is the introduction now how to write introduction बुझिला कि नहीं केमति हम introduction लिखिबा इंट्रोडक्शन में कहल सब ऑथेंटिकेटेड डाटा एंड ऑल दोस विषय गुडा रहिया दरकार तापर आसे बॉडी पार्ट व्हाट आर द कंसर्न्स विथ इकोनॉमिक ग्रोथ व्हाट आर द कंसर्न्स विथ इकोनॉमिक ग्रोथ काहे की इकोनॉमिक ग्रोथ हो ना द फर्स्ट इज विशियस साइकिल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन अधिक जॉबलेस ग्रोथ jobless growth poor investment in infrastructure रे poor investment in social infrastructure in terms of school college है education जोड़ा कहली health it doesn't capture income inequality जो इनइक्वालिटी अच्छी गिनी कोएफिशिएंट रा कथा कहली गिनी कोएफिशिएंट को ये इंक्लूड करनी गिनी कोएफिशिएंट इज नॉट देयर एनवायरमेंटल इंपैक्ट को ये काउंट करनी डजंट कंसीडर द एनवायरमेंटल इंपैक्ट now these are the concerns तापर आसीबो in concept of inclusive growth now you have to write some concept means the जदि किछि बेसिक डेफिनेशन अछि लाइक OECD केमते डिफाइन करू जे distributed fairly across the society creates opportunity for all World Bank defines the inclusive growth as inclusive growth refers to both to the pace and pattern of growth which are interlinked and must be addressed together so inclusive growth concerns with quality of growth it is all about quality of growth long term perspective now quality of growth माने को एंगल एटी हमें देखिबा quality of growth को एंगल ऊपर हमें फोकस करिवा
लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बुझिले कि नहीं कौन कह लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इक्वल सोसाइटी means this is sustainable it has to be sustainable equal society means egalitarian society you can write for all boost the economy the economic growth egalitarian माने economic growth increase in living standard increase in living standard बुझे कि नहीं लिविंग स्टैंडर्ड केमती इंक्रीज कर पारियो माने जोड़ा बेसिक हेल्थ शेल्टर एजुकेशन ये सब गुड़ा हम प्रमोट कर पारियो बुझे रियलाइजेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स realization of basic human rights realization of constitutional goal realization of constitutional goal constitutional goal means this is all about your fundamental rights this is all about your fundamental rights है ना तापर नेक्स्ट लिखो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ होवा दरकार इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन फाइनेंशियल इंक्लूजन सोशल डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट और एई एस्पेक्ट गुडा को आसीबो जो गुडा हम ऑलरेडी डिस्कस करले बर्तन जो पॉइंट हम बर्तन ऑलरेडी डिस्कस करले से पॉइंट गुडा को डिस्कस करियो गला नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा बुझियला ये क्वेश्चन बुझियला जो क्वेश्चन करैली क्वेश्चन विथ आंसर दीटा जाक देछि देखो ये क्वेश्चन भी देछि आंसर भी देछि बुझियला Next point, investment in social infrastructure is a key to engineer an inclusive and sustainable growth in India. Question पढ़ा तीन थर क्वेश्चन कौन डिमांड करूची आगे बुझ कीवर्ड बाहर करो तापरे क्वेश्चन पढ़ बुझ तापरे कीवर्ड देख क्वेश्चन कौन डिमांड करूची देख तापरे आगे investment if there is investment in social infrastructure investment न हेले ये कुछ inclusive और sustainable growth करी हबो नाही कौन कुछ ये inclusive और sustainable growth करी हबो नाही हैला so social infrastructure covers range of foundational services it covers range of foundational services and facilities which meet social needs strong community so it should contribute towards good quality of life such as health education skill development issue
So social infrastructure kiye na health, education, skill development, women empowerment, environment, justice. Now all these factors are required to ensure inclusive growth. All these factors are required to ensure inclusive growth in India. Okay, next. Explain intra-generational and intergenerational issues of equity from the perspective of inclusive growth and sustainable development. देखो क्वेश्चन कौन कहूँ बुझ क्वेश्चन डिमांड कौन कर देखा दीटा वे एटा डिस्कस करिया दीटा पॉइंट गोटे हला इंट्रा जनरेशनल आ गोटे हला इंटर जनरेशनल इश्यूज ऑफ इक्विटी कौन कहले इंटर जनरेशनल और इंट्रायर अर्थ कौन ये दीटा होती सस्टेनेबल इक्विटी कॉन्सेप्ट भीतर एटा सस्टेनेबल इक्विटी अर्थ होची a proper balance between intergenerational equity means intergenerational means present and future तो सिंपल जिंस गोटे बुझाऊची यदि क्लाइमेट चेंज हुए क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट किए करूची अधिक को माने ना रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी अर्बन लोक करूचंदी डेवलप्ड कंट्रीज एमान करूचंदी यार इंपैक्ट कहां पर पडुची यार इंपैक्ट ऑन पोर रिच यूज कले पोर ऊपर पड़िला अर्बन कला रूरल ऊपर पड़िला डेवलप्ड कला अंडर डेवलप्ड ऊपर पड़ला डेवलप्ड कला अंडर डेवलप्ड ऊपर पड़ला बुझला दिस इज द स्ट्रक्चर ताले एठी हमें कोन देखुछे ना प्रेजेंट और फ्यूचर एटा कोन दिस इज बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर इंटरजेनरेशनल इक्विटी बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर पीपल इंट्राजेनरेशनल बिटवीन रिच एंड पोर मींस करंट जनरेशन विथ रिच और पोर विथ डिवाइड ये कहूँ प्रेजेंट और फ्यूचर एटी सेमती आमे ऐड कले प्रेजेंट जनरेशन एवं ये इंपैक्ट अधिक पड़िबो का ना फ्यूचर जनरेशन इंपैक्ट का पर अधिक इंपैक्ट मोर इंपैक्ट ऑन द फ्यूचर जनरेशन बुझिला ताले इंट्रा जनरेशनल को फैक्टर ऊपर देखु जी मैं कुछ रिच और पोर डिवाइड जेंडर इनइक्वालिटी डिजिटल डिवाइड रूरल अर्बन डिवाइड ये सब इंट्रा भीतर आसे इंटर रिसोर्स एक्सप्लोटेशन ग्लोबल वार्मिंग कथा कहली ग्लोबल वार्मिंग माइंडलेस डिफोरेस्टेशन लिटरेसी रेट ना ये सब आसवे का भीतर ना इंटरजेनरेशनल इक्विटी ऑल दिस विल कम अंडर इंटरजेनरेशनल इक्विटी बुझिएला ना डाउट
क्लियर बहुत बढ़िया एमती आहुरी बहुत टॉपिक अच्छी ओडिशा ऊपर टॉपिक थिला व्हाई ओडिशा इज इन न्यूज बैलेंस रीजनल इंबैलेंस कोन कॉजेस ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी ओडिशा रे जदि हम देखिया कॉजेस ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी कोन ना इंडिया रे ज्योग्राफिकल कंडीशन सॉरी इंडिया ऊपर पड़छे रीजनल डिस्पैरिटी काहे की दिखा दउछ हमको ना इनहॉस्पिटेबल रीजन लाइक हिमालय वेस्टर्न घाट जो रीजन को जाई होनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रे जो जंगल अछि वेजिटेशन डेंस फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न very low rainfall in some region very low rainfall in some region drought flood prone regions diverse culture example scheduled tribal uneven resources uneven resources है ना ये सब ज्योग्राफी पाई कॉलोनियल हिस्ट्री जदि हमें देखिबा तीनटा प्रेसिडेंशियल टाउन के मुंबई चेन्नई बा मद्रास जाऊ कहूछ और कोलकाता यहीगुड़ा ही ग्रो कले रेस्ट ग्रो कले ये तीनटा रीजन को ब्रिटिशर माने फोकस कले पॉलिसी इशू करप्शन पॉलिसी रो प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं पानी इंप्लीमेंटेशन नहीं पानी एटा असला का भीतर ना पॉलिसी इशू डिस्पैरिटी इन केबीके disparity in KBK. So KBK regions comprises undivided Koraput, Bolangir and Kolahandi districts. Now देखो एटा ए region जतिक region देखछो एटा हला KBK region. यदि population देखिबा हमें KBK district geographical area रा total area रा 30%. Population wise देखिबा जदि हमें एटा 20%. बुझिए ना बुझिए ना so there are different plans by the government of Odisha like Biju KBK plan Biju कोन KBK plan development केमती एटी करा जाय परियो now I would a question है पर Odisha is still poor why Odisha is still poor despite of having mineral resource river resource port irrigation fertile coastal plain ये सब छिबा सत्वे Odisha poor काहे की because of natural calamity because of natural calamity western Odisha रे drought eastern Odisha रे flood untapped potential जति रिसोर्स अछि हमें से रिसोर्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करि पारु नै नो connectivity infrastructural facility is not there literacy and entrepreneurship low industrialization LWE ई सब कारण मानक पे ओडिसा डेवलप ही पारु सॉल्यूशन कोन ना यार प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स LWE को रिड्यूस करबा हला लिटरेसी रेट को डेवलप करबा स्किल डेवलपमेंट करबा फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्लूसिव ग्रोथ करबा now these are the points which we have to discuss बुझिए गला ना नहीं डाउट is this clear everyone समस्त क्लियर ताले आज क्लास रे कोन कोन को पॉइंट ऊपर हम डिस्कशन कले इंक्लूसिव ग्रोथ फाइनेंशियल इंक्लूजन रीजनल डिस्पैरिटी बा रीजनल इंबैलेंस एलडब्ल्यू माने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म माओवादी जहा कहउछो इंटरनल सिक्योरिटी क्लास करना थला पढैतली किछ दिन तळे एलडब्ल्यू मींस माओवादी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट बुझिए ना एई पॉइंट ना बुझले तो रीजनल डिस्पैरिटी अर्थ कोन एठी रीजनल डिस्पैरिटी माने गोटे रीजन और रेट ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट देन रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अनदर रीजन गोटे रीजन रेट ऑफ डेवलपमेंट इज लो एज कंपेयर टू अनदर रीजन बुझिला या नहीं बुझो यदि एति के भीतर किसी डाउट रहला ताले पचा
ताले कौन देखिले आमे पढ़िले इनक्लूसिव ग्रोथ कहीं इनक्लूसिव ग्रोथ दरकार ना इनकम डिस्पैरिटी को मेंटेन करिया पई कमिया पई रीजनल डिस्पैरिटी पई डेमोग्राफिक डिविडेंड पई हैला एलिमेंट्स कौन ना सोशल इंक्लूजन फाइनेंशियल इंक्लूजन इकोनॉमिक इंक्लूजन डिजिटल इंक्लूजन एनवायरमेंटल इंक्लूजन स्ट्रैटेजी कौन एटी कहना सोशल डेवलपमेंट व्हाट आर डायमेंशंस फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ ना गवर्नेंस एनर्जी रिसोर्स टेलीकॉम टेक्नोलॉजी को डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एजुकेशन हेल्थ केयर डेवलपमेंट हो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम कथा कहली सौभाग्य स्टैंड अप इंडिया आयुष्मान भारत जाम ट्रिनिटी निधि आयुष्मान भारत पीएम गतिशक्ति ठीक है व्हाई इज ओडिशा पोर एंड सो मेनी पॉइंट्स टू डिस्कस ऑलराइट देन को पढ़ी के आस आ जहाँ देखिए नेक्स्ट क्लास पुणी आसंता काली क्लास रे आउ कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करिया ठीक है ठीक था आज नेक्स्ट क्लास रे आउ कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करिया दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन थैंक यू गुड नाइट